yesterday was the first day when we had taken a decision to open primary schools across Kashmir, all the districts of Kashmir. We did start that, and there were staff members as well as students who attended, although the student attendance yesterday was not very high. Today, as we have reviewed the position, we have noticed a considerable improvement in attendance of children and encouraging feedback and request from parents. Keeping that in view and keeping in view the number of requests that we have received, it has been decided that middle schools in Kashmir Valley will also start functioning from tomorrow in areas where primary schools are already open. तो जैसा मैंने बताया कि प्राइमरी स्कूल्स हमने कल खोले थे, आज अटेंडेंस में इंप्रूवमेंट हुई है और अभिभावकों से बहुत सी रिक्वेस्ट्स आई हैं. सो कीपिंग दैट इन व्यू, कल से जो है हमने मिडिल स्कूल्स भी खोलने का फैसला किया है उन क्षेत्र. If you interrupt me, I will not be able. No. What? No. Wednesday का बोला है. Don't interrupt. I just finished. Then you May I request all of you? You know, we have this relationship since a long time. I brief you, you ask me questions. But if you disturb me like this, I will be unable to say anything. You will be unable to ask me anything. तो इसलिए हमने ये तय किया है कि कल से उन क्षेत्रों में जहां प्राइमरी स्कूल्स चल रहे थे, मिडिल स्कूल्स भी खोले जाएंगे. नाउ on the rest of the issues, we have reports of normal functioning from large parts of the state. As we speak, 12 of the 22 districts of the state are functioning normally. And if we look at it, 136 out of the 197 police stations in Jammu and Kashmir have no daytime restrictions. जम्मू एवं कश्मीर के 197 पुलिस स्टेशंस के क्षेत्र में 136 पुलिस स्टेशन ऐसे हैं जहां पे किसी भी प्रकार की डे टाइम रेस्ट्रिक्शंस या पाबंदियां नहीं हैं. इसी तरह अगर हम कश्मीर वैली अलोन में देखें तो 111 में से 50 पुलिस स्टेशन, 50 पुलिस स्टेशन आउट ऑफ 111 हैव नो डे टाइम रेस्ट्रिक्शंस. Government officers have opened. Government officers, in fact, are reporting more than normal attendance. जहां तक कनेक्टिविटी का सवाल है, out of almost 96,000 landlines in the state, जम्मू, कश्मीर एंड लद्दाख, तकरीबन 73,000 लैंडलाइंस जो हैं की रिपोर्ट है हमारे पास फंक्शनैलिटी की. एटीएम्स कश्मीर वैली अलोन में 734 एटीएम्स हैं, जिनमें से तकरीबन पिछले 12 दिन में हमारे पास 800 करोड़ रुपए के विड्रॉल की इंफॉर्मेशन है. In areas where there are restrictions, where there are relaxations, public transport has begun to function, and आज से हमारे पास इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट मूवमेंट की भी रिपोर्ट्स आई हैं. National highway and the airport continue to be normal. In the entire state, there are adequate supplies of all essential items, including food, POL, medicines, etc. All three regions, Jammu, Kashmir एवं लद्दाख में essential items, POL, etc. की पर्याप्त मात्रा है. और अगर मैं आपको एक फिगर बताऊं
कश्मीर वैली अलोन में 13,287 एलपीजी सिलेंडर्स जो हैं वितरित किए गए। सो थैंक यू वेरी मच। आई कैन टेक 2 or 3 questions. So thank you very much. I can take 2 or 3 questions. कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। ऑन लैंडलाइंस एंड कम्युनिकेशन मैंने जैसे आपको बताया कि तकरीबन 96,000 लैंडलाइन में से 73,000 लैंडलाइंस जो हैं वो चालू होने की फंक्शनैलिटी की हमारे पास खबर है। ये हमारे पास कुछ जगह से कंप्लेंट्स आई हैं कि नहीं चल रही। वी हैव टेकन इट अप विद BSNL. They are facing some capacity constraints, but they are working on it, and as per our promise to you, all the landlines will be restored full functionality. Too many crossed landlines here. I can't hear anyone. आपने ये जफर ने हमें बताया, लैंडलाइंस आर बीइंग रिस्टोर्ड, दे विल बी रिस्टोर्ड। जी मैम, जी मैम। You are not talking about internet, you are not talking about large scale difficulties that people are facing. So can you come clear on those things? देखिए मैडम, how long can we rely on you as the source of information? Like we also have our sources as journalists. We should have our own source. But you as a person are our source at the moment. But do you think the source is reliable? I'm not claiming to be the ultimate source of either information or wisdom. So, but you know, I'm here to tell you what I know, and of course you are free to sort of cross check or take whatever decision. See, मैंने जैसे मैंने आपको बताया कि लैंडलाइन कनेक्टिविटी, you see the promise that we made to you last week was that landline connectivity would be fully restored. We are working on that, and already we have reached a decent enough figure of 75%. We will try and restore 100% landline connectivity after